I'm coming to the different type of smooth muscles are there. One is single unit smooth muscle, another is multi-unit smooth muscle. Single unit smooth muscle. Single unit smooth muscle, another is multi-unit smooth muscle. Single unit में क्या होगा? Muscle fiber are loosely joined कि loosely joined? देखिए इसका कंसेप्ट को समझने के लिए कोशिश करिए. We are as a team, right? We are as a team working for a particular function only. Means we have a coordination or communication with each other. That is why we are working as a team. The same here also. The muscle will work as a unit. Single unit. Okay? Work as a unit means there must be have some kind of coordination between them. That is why they are communicating, and as because of the communication is there, that is why they are work as a unit. So means which junctions must be present between them? Gap junction. आ गया. तो गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा सिंगल यूनिट में. तो क्लोजली जॉइंड है कि लूजली जॉइंड है? क्लोजली होगा तभी गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा, कम्युनिकेशन होगा, सो वर्क एज ए यूनिट. सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा उनका. ठीक. अब सेकंड हो गया मल्टी यूनिट, मींस दे वर्क एज डिफरेंट यूनिट. मींस एब्सेंस ऑफ विच जंक्शन? गैप जंक्शन. मींस दे आर tightly arranged, compactly arranged कि loosely arranged? Not so tightly, not so compactly arranged. ठीक है. तो आप अपने बॉडी में सोचिए कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा जो सिंगल यूनिट में बना है एंड कौन सा होगा जो मल्टी यूनिट से बना है. बताइए. Here the muscle fiber closely joined by gap junction. Here no gap junction. ठीक है. सेकेंड हो गया वर्क एज ए सिंगल यूनिट. This will work as a multiple unit. This is automatic and rhythmic contraction. And this is contraction more or less as independent. Now comes to the example of this. Example हो जाएगा hollow visceral organs. Hollow visceral organs like your stomach, small intestine, urinary bladder, मल्टी यूनिट में कौन कौन आ जाएगा? Wall of blood vessels, especially I'm telling about the large blood vessels.
डायरेक्टर पिली मसल, डायरेक्टर पिली मसल कहाँ पे होता है? हेयर रूट, ठीक है ना? हेयर रूट मसल इज कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्टर पिली. It is present in the hair root called as erector pili muscles, ciliary muscle, iris muscle. ये सारे के सारे मल्टी यूनिट. हाँ, यूटेरस में एक्चुअली क्या है कि ओनली वन लेयर इज प्रेजेंट मसल्स, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं. बट आपकी बात सही है, यूटेरस में भी आ जाएगा शाम, क्योंकि जितने भी हॉलो विसरल ऑर्गन दिया है ना सब जगह, इसलिए एक्सेट्रा भी यूटेरस ऐड कर सकते हैं. कंप्लीट है. So now we are coming to the next muscles present in your body, and that is what? Cardiac muscle. चिल करिए दोनों, रिमोट छोड़ के जाइएगा. तो कार्डियक मसल्स, that is presenting myocardium of heart. It is not the present in the pericardium or endocardium. Pericardium किससे बना है? Pericardium किससे बना है? इसको किए देवनाथ जी? इसको दोनों किए. पेरिकार्डियम का स्ट्रक्चर क्या है? मेड अप ऑफ विच टिश्यू? अरे बोलिए ना. पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल. एंड एंडोकार्डियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम. मतलब देखो, तीन अलग अलग लेयर में तीन अलग अलग टिश्यू आ गया. कनेक्टिव टिश्यू आउटर, मिडिल हो गया मस्कुलर टिश्यू, इनर हो गया एपिथेलियल टिश्यू, प्लस नर्व्स तो सप्लाई हुआ है. दैट इज व्हाई एवरी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑल टाइप ऑफ टिश्यू, नॉट ओनली हार्ट. सारे के सारे ऑर्गन में सारे के सारे टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा ये चीज. Comes to the diagram part. This is actually the only muscle which is branched. And branching का कारण क्या है? मैं एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर के साथ एडजेसेंट में कनेक्टेड है. And that connection is called as what? Interconnected disc. No, that connection is called as oblique bridge. इंटरकनेक्टेड डिस्क जो है वो साइड टू साइड अरेंजमेंट है. लैटरली कैसे अरेंज्ड है? वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है ना, बाय मींस ऑफ ऑब्लिक ब्रिज. एंड उस ऑब्लिक ब्रिज के वजह से ये ब्रांचिंग आपको दिखाई देता है. सो इट इज द ओनली मसल व्हिच इज ब्रांच्ड. ये जो मैं अभी डायग्राम कर रहा हूँ ये क्या है ना, इंटरकनेक्टेड डिस्क, साइड टू साइड अरेंज्ड है.
and is cardiac muscle is striated ki unstriated? But it is voluntary ki involuntary? तीन चीज आपके सामने आएगा, striated voluntary, striated involuntary, non-striated involuntary. striated voluntary कौन है? Skeletal. striated involuntary cardiac. unstriated involuntary smooth. समझे? So here it is the alternate light band and dark band. मैं खाली लेबलिंग पर्पस के लिए कर दिया, बाकी आप लोग कर लीजिएगा आराम से. This is intercalated disc. This is dark band. This is light band. This is nucleus. This is oblique bridge. Actually, intercalated disc contain gap junction and also desmosome. Desmosome हम लोग पढ़े थे टिश्यू चैप्टर में, एपिथेलियल टिश्यू में, कि desmosome is the strongest adhering junction. Strongest adhering junction और anchorage का काम करता है. हमने बताया था कि there are 5 different type of anchorage or adhering junction. One of the strongest anchorage or adhering junction is what? Desmosome plus gap junction. दोनों प्रेजेंट है इंटरकलेटेड डिस्क में. तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि थ्रू द इंटरकलेटेड डिस्क द कार्डियक मसल फाइबर आर बीइंग कम्युनिकेटेड विद ईच अदर. नंबर 1. नंबर 2, दे आल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय मींस ऑफ द ऑब्लिक ब्रिज. यस और नो? तो यहाँ पे देखिए डुअल स्ट्रक्चर है टू कम्युनिकेट विद द एडजेसेंट कार्डियक मसल फाइबर. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे स्टिमुलस रीच करता है, that stimulus will be sprayed throughout the muscle fiber within no time. Yes or no? Yes. तो ये बहुत ही फास्ट स्प्रेड करेगा. And अगर बहुत ही फास्ट स्प्रेड करता है because of the intercalated disc and because of the oblique bridge which is act as a booster action, which is act as booster. तो उसके वजह से कार्डियक मसल्स जो है वो एक साथ यूनिट की तरह काम करते हैं. Stimulus will be approached to a particular muscle fiber, but that will communicate to all within no time because of the presence of intercalated disc and oblique disc. Act as a booster junction. And इसीलिए आप लोगों को पता है कि both the auricle contract at a time, both the ventricle contract at a time. Auricle and ventricle are contract different timing. Auricle का contraction, ventricle का contraction different है. But both the auricle contract at a time, both the ventricle also contract at a time because this is the cause. समझ में आया? तो कार्डियक मसल क्या है? सिंगल यूनिट मसल है कि मल्टी यूनिट मसल है? सिंगल यूनिट. क्लियर है?
तो कैरेक्टर 2-3 नाम लिख देते हैं। ब्रांच्ड, इनवॉल्यूंटरी, स्ट्राइटेड, non-fatiguing muscle, non-fatiguing muscles, that is why इसको नॉन स्टॉप मसल भी बोलते हैं, because this is the muscle which never stop throughout the life. ये कभी भी फैटिग नहीं होता है, so never fatigue, non-fatiguing muscles. Oblique breeze and intercalated disc act as booster of wave of contraction. So the whole muscle act as or work as a unit. That is why cardiac muscles are called as single unit muscle. Complete है। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया आपको देना पड़ेगा। What is the meaning of refractory period? आप पूछ सकते हैं कि why this particular muscle is non-stop muscle? Why this muscle is never fatigued? Any idea? Smooth muscles भी तो non-fatigue muscle है कि नहीं? लेकिन वो non-stop नहीं है। That is also not fatigue. This is also not fatigue, but that is occasionally fatigue, but this is never fatigue. That is why it is non-stop. So what is the difference between them? ऐसा क्या खास है इसमें जिसके वजह से ये कभी फैटिग होता ही नहीं है? Anybody? अरे कुछ तो आइडिया लगाओ। आइडिया लगाना बहुत अच्छी चीज है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ब्लड सप्लाई वन ऑफ द फैक्टर। ये अगर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा तो ऑक्सीजन आपको ज्यादा सप्लाई होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा होगा, तो फैटिग कम होगा कि नहीं? कम होगा, लेकिन होगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, वन ऑफ द फैक्टर। आई कैन एडमिट की वन ऑफ द फैक्टर। और क्या है? दिमाग लगाइए। हाँ हार्ट मसल में कार्डियक मसल एक हार्ट मसल है। हाँ तो कौन क्या हुआ? हाँ तो क्यों नहीं होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ यू आर इन द राइट ट्रैक। बोलिए फिर। बीट करता है 0.8 सेकंड टाइम लेता है। हाँ। तो उसमें तो 0.4 सेकंड में पूरा हार्ट को डैश कर देता है। उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड। दैट इज द आंसर। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब है द पीरियड, द गैप व्हेन द मसल्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द नेक्स्ट स्टिमुलस। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये रिलैक्स कर रहा है। During the relaxation of a muscles, if a second stimulus will approach, the muscle will not respond.
अगर रिस्पॉन्ड कर गया तो फिर से कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर देगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ रिलैक्सेशन। अगर हम पूरा रेस्ट लेके फिर से काम करेंगे तो काम एफिशिएंट होता है। बिना रेस्ट लिए अगर काम करेंगे ना काम ठीक से होगा ना अपना रेस्ट भी ठीक से होगा, तो हम लोग थक जाएंगे। वही होता है। ऑलवेज थिंक साइंटिफिकली, क्योंकि कार्डियक मसल के पास रिफ्रैक्टिव पीरियड और लेंथ ज्यादा है। सो कार्डियक मसल बिना रिलैक्स किए फिर से कॉन्ट्रैक्शन कभी नहीं करेगा। एंड दैट इज व्हाई वी हैव द डायस्टोलिक फेज 0.4 सेकेंड। जब तक ये 0.4 सेकेंड डायस्टोलिक फेज मतलब जॉइंट डायस्टोल की बात करें, जब तक कंप्लीट नहीं होगा फिर से सिस्टोल स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए वो कभी भी फैटिग नहीं होता। प्लीज राइट रिफ्रैक्टरी पीरियड। Interval during which a muscle fiber failed to respond to a second stimulus, failed to respond to a second stimulus. मतलब आप इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टरी पीरियड को हम डायस्टोलिक भी बोल सकते हैं। एंड ये हाईएस्ट किसमें? कार्डियक मसल। लिस्ट किसमें होगा? स्केलेटल मसल, जो फास्ट फैटिग होता है। विच इज फास्ट फैटिग मसल? स्केलेटल, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव पीरियड सबसे कम होता है। ऑलवेज थिंक, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड साइंटिफिकली। आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आई थिंक आप लोग का तीनों मसल्स कंप्लीट हो गया। अभी थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे। Sir, in case of skeletal and smooth, so this duration is less. but sir, वो भी मतलब second stimulus पर sir continue. बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। देखो रेस्पॉन्स कितना फास्ट है कितना स्लो है, वो डिसाइड करता है कि आपका फैटिग जितना जल्दी होगा कि कम होगा। स्ट्राइटेड मसल क्या होता है, बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड करता है। मतलब मैं स्केलेटल की बात कर रहा हूँ, तो सेकेंड स्टिमुलस जैसे आएगा तुरंत वो रिस्पॉन्ड करेगा। मतलब पूरा रिलैक्स कंप्लीट होने से पहले फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, वो जल्दी फैटिग हो जाएगा। लेकिन स्मूथ मसल क्या है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन करता है। व्हाई? बिकॉज द रिस्पॉन्स इज स्लो। वो रिस्पॉन्ड करेगा लेकिन स्लो रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए स्लोली फैटिग होता है। लेकिन ये रिस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं करेगा जब तक उसका पूरा डायस्टोल कंप्लीट नहीं होगा तब तक। इसीलिए ये कभी भी फैटिग नहीं हो। अब ये थक जाएगा तो हम लोग ऊपर हुआ स्वाहा हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तो कंपैरिजन बिटवीन द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स। कंप्लीट है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, स्केलेटल, स्मूथ, कार्डियक। पॉइंट नंबर 1, शेप ऑफ फाइबर। बताइए शेप ऑफ फाइबर क्या होगा?
स्केलेटल क्या था? सिलेंड्रिकल। स्मूथ क्या था? स्पिंडल सेल। अभी हम लोग कार्डियक देखे, कार्डियक भी सिलेंड्रिकल। पॉइंट नंबर 2, एंड ऑफ फाइबर। एंड ऑफ फाइबर स्केलेटल क्या होगा? ब्लंट एंड। स्मूथ टैपरिंग। और क्या था? फ्यूजिफॉर्म। कार्डियक अगेन ब्लंट। सिलेंड्रिकल होगा तो क्या होगा? ब्लंट। नंबर 3, स्ट्रक्चर। skeletal muscles, that is occurs in bundle. Occurs in bundles. Smooth muscles occurs in seat like. सीट की तरह होता है वो। कार्डियक हो जाएगा आपका 3D नेटवर्क। नंबर 4, ब्रांचिंग। कौन सा ब्रांच है? कार्डियक ओनली ब्रांच होगा, ये क्या होगा? अनब्रांच्ड। दिस इज अनब्रांच्ड। This is the only muscle fiber which is branched is cardiac. Point number 5, blood supply. Skeletal muscle को blood supply abundant हुआ है। Here in the smooth muscle it is poorly supplied, and in the cardiac it is highly reached. Point number 6, nature. Nature क्या होगा? It is voluntary. It is involuntary. It is also involuntary. Number 7, control. अगर वॉलंटरी है तो अंडर द कंट्रोल ऑफ सीएनएस की एएनएस क्या होगा? और अगर इनवॉलंटरी है तो हाँ। Number 8, stretch. Here it is striated, is unstriated. This is striated. For number 9, intercalated disc and obliques. Intercalated disc and obliques. Here it is absent. Here it is absent. Here it is present. आप एक चीज तो देखे होंगे कि कार्डियक मसल फाइबर हैज द some of the characters similar to the striated, or that is
skeletal and some of the character is similar to the smooth. What character of the cardiac muscle fiber is similar to the skeletal muscle? Striated and cylindrical, blunted, है कि नहीं? और किसके साथ स्मूथ के साथ क्या मैच करता है वो? यूनिन्यूक्लिएटेड, सेंट्रिक एंड इनवॉल्यूंटरी, है कि नहीं? नेक्स्ट नंबर 10, न्यूक्लियस. Here it is multi-nucleated and centric, sorry, peripheral. स्मूथ में हो जाएगा सिंगल एंड सेंट्रिक. कार्डियक आल्सो सिंगल एंड सेंट्रिक. Number 11, mitochondria. Moderately abundant. This is less, and here are abundant. Myoglobin. Number 12. मायोग्लोबिन क्या करता है? स्टोर करता है कि नहीं ऑक्सीजन? तो फिर किस में ज्यादा होगा? कार्डियक में ज्यादा होगा. वॉल्यूंटरी दैट इज स्केलेटल में भी तो ज्यादा होगा. क्योंकि myoglobin is necessary for the muscles to function very quick. तो तीनों में से क्विक मसल कौन है? फर्स्ट एंड थर्ड दोनों ही क्विक है कि नहीं? लेकिन स्लो कौन है? स्मूथ. इसलिए मायोग्लोबिन कम होता है उसमें. Number 13, contraction. Quickly. It is slowly. This is quickly and also rhythmic. And the last number 14, fatigue. This is readily fatigue or slowly fatigue. First one. तो easily fatigue हो जाएगा. It is slowly fatigue. This is never fatigue. That is why it is non-stop muscle. So these are the comparison for the different type of muscles present. Now we will start the next tissue and the last tissue. Also, nervous tissue. Start करें. It comes to the nervous tissue. तो सब लिख रहे हैं ना? हाँ? छोटे बच्चे नहीं है कि मैं जाके क्रॉस चेक करूं.
कि आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। आप लोग उतना ज्यादा समझदार हो गए हैं कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जानते हैं, क्लास में पढ़ना है, क्या करना है, ये सब आप बेटर जानते हैं कि आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो नर्वस टिश्यू, ectodermal, mesodermal, endodermal, which one? It is ectodermal origin. Except what? ये है क्वेश्चन, माइक्रोग्लिया। क्योंकि माइक्रोग्लिया हम लोग पढ़ेंगे बाद में, मतलब इसी टॉपिक में ही पढ़ेंगे, वन ऑफ द नर्वस टिश्यू सेल्स व्हिच इज मेसोडर्मल ऑरिजिन। मैंने आपको जो पूछा था ना अभी कुछ देर पहले कि फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट इन द बोन, प्रेजेंट इन द कैटिलेज, प्रेजेंट इन द लिवर, प्रेजेंट इन द लंग्स, प्रेजेंट इन द किडनी, प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम, व्हिच वन? माइक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया क्या है ना, फैगोसाइटिक है। एंड जो फैगोसाइटिक होगा वो कौन सा टाइप का सेल्स होगा? कनेक्टिव टाइप का सेल होगा। और कनेक्टिव सेल्स होगा तो कौन सा सेल, कौन सा ओरिजिन होगा? मेसोडर्म। ठीक है। जितने भी phagocytic cells है, they are actually modified what? Macrophage. All the phagocytic cells present in your body are modified macrophage. The nervous tissue, it is formed of 4 different type of cells. Nervous tissue is formed of 4 different type of cells. Neuron or nerve cell. Number 2, neuroglia or glial cell. Number 3, ependymal cell. And number 4, neurosecretory cells. These are the 4 different type of cells together to form the nervous tissue. We will discuss one by one. So we are coming to the neurons or nerve cells. So neuron or nerve cell, this is actually the structural and functional unit of what? Nervous system. So the structural and functional unit of nervous system. इसका जो property है, which is similar to muscles, क्या है? Excitability and conductivity. याद रखिए ये दोनों कॉमन है, which is similar to the muscle, same. Excitability का फंक्शन मैंने क्या बताया था, मतलब क्या मैंने बताया था? When the stimulus will approach, the cells or the structure will respond to that stimulus is called as what? No, excitability. And that stimulus should be what? Minimum strength of stimulus. And उस minimum strength of stimulus को क्या बोलते हैं? Threshold stimulus. Threshold के नीचे होगा तो वो respond नहीं करेगा, और threshold के ऊपर होगा तो नॉर्मल रिस्पॉन्ड और मोर रिस्पॉन्ड, नॉर्मल रिस्पॉन्ड। ये याद रखिए हमेशा, दैट इज कॉल्ड एज ऑल नॉन प्रिंसिपल। स्टिमुलस मिनिमम से जितने भी ज्यादा हो, रेस्पॉन्ड हमेशा क्या होगा? नॉर्मली। समझे कि नहीं? तो स्टिमुलस अगर नॉर्मल से कम हो गया तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नॉर्मल से जितने भी ज्यादा हो नॉर्मल रिस्पॉन्ड करेगा। इसीलिए ऑल नॉन बोलते हैं, आइदर और
नॉट, आइदर रिस्पॉन्ड करेगा या तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ज्यादा करेगा कम करेगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या तो खुश होंगे या तो हम लोग गम के सागर में डूब जाएंगे। ज्यादा खुशी ज्यादा गम ऐसा ऑप्शन नहीं है। अरे समझेगी नहीं? हाँ, तो न्यूरॉन्स का दो पार्ट है। वन पार्ट इज कॉल्ड एज साइटन or otherwise called as cell body, otherwise called as pericardium और soma। तो चार अलग अलग नेम, साइटन, सेल बॉडी, पेरिकार्डियम और सोमा। एंड सेकेंड क्या है ना, नर्व प्रोसेसेस, नर्व प्रोसेसेस। What is the meaning of nerve processes? Any structure which is extended from the cyton is called as what? Processes. प्रोसेस का मतलब तो वही होता है ना जो स्प्रेड किया है, जो बाहर निकला है, जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर से बाहर निकला है, उसी को क्या बोलेंगे ना, प्रोसेस। जैसे कि मेन ट्री का एक ट्रंक है, ट्रंक से बहुत सारा ब्रांचेस है, सब ब्रांचेस है, ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट ना, प्रोसेसेस ऑफ द ट्री। प्रोसेसेस ब्रांच हो सकता है, सब ब्रांचेस होता है, सब ब्रांचेस हो सकता है, ट्विग हो सकता है। वैसे ही मेन स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे न्यूरॉन का ना, साइटन और सेल बॉडी। वहां से जितने भी स्ट्रक्चर रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे ना, प्रोसेसेस। लॉन्ग प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज व्हाट ना, एक्सॉन। एंड द स्मॉल nerve process is called as what ना, डेंड्राइट, डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट। Now you tell me, axons are afferent in nature ki efferent in nature? Means axon will carry the information or stimulus away from the cyton ki to the cyton. So efferent हुआ कि afferent हुआ? Efferent. Whereas dendrons and dendrites will carry the stimulus towards cyton. So it is afferent in nature. Can you tell me what is the difference between the neuron, nerve fiber and nerves? मैं आइडिया लेना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में सही जगह पे सही चीज स्ट्राइक करे। न्यूरॉन, नर्व फाइबर एंड नर्व्स में क्या डिफरेंस? आप लोग तो नाम सुने होंगे ना, न्यूरॉन ये है कि ये नर्व फाइबर है, आपको क्या लगता है दोनों सेम? क्या है फिर? एनीबॉडी? माइलिन से होगा तो न्यूरॉन होगा, और माइलिन से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नर्व फाइबर हो जाएगा। सर नर्व में बहुत सारे नर्व फाइबर होते हैं और नर्व फाइबर में बहुत सारे न्यूरॉन। अरे बाप रे, नहीं, योर कंसेप्ट इज कंप्लीटली रॉन्ग। फर्स्ट जो बोला वो सही है कि नर्व्स कंटेन्स मेनी नर्व फाइबर, दैट्स राइट, बट नर्व फाइबर डजंट कंटेन मेनी न्यूरॉन। तो न्यूरॉन एंड नर्व फाइबर में बहुत ही क्लोज रिजेम्बलेंस, क्लोज, एक ही डिफरेंस है न्यूरॉन एंड नर्व फाइबर में कि न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वो नेकेड है, मतलब विदाउट सिथ। एंड आप लोग पढ़े हो कि एक्सॉन के चारों तरफ दो सिथ होता है, जो इनर सिथ है दैट इज कॉल्ड एज माइलिन सिथ और मेड्यूलरी सिथ, एंड जो आउटर सिथ है उसका नाम है न्यूरिलेमा। ये दोनों क्या है? द कवरिंग ऑफ द सिथ प्रेजेंट अराउंड द एक्सॉन। तो एक्सॉन अभी नेकेड हुआ कि कवर्ड हुआ? So now we can say that it is called as what na, encysted axon. क्या बोलेंगे उसको? Encysted axon with sith. Then encysted axon is called as what na, nerve fiber. अगर naked neuron हुआ, neuron. एक naked axon is called as neuron. Encysted axon is called as nerve fiber. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि myelinated nerve fiber, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। कभी सुने हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन? कभी सुने?
धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड द बंडल ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड एज नर्व्स. So let's see. मैं जो डायग्राम करूंगा अभी इसमें एक्चुअली माइलिन सिथ प्रेजेंट होगा. मतलब ये माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा कि न्यूरॉन होगा? नर्व फाइबर. एक्चुअली बॉडी में न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, जो भी होते हैं क्या है? नर्व फाइबर होते हैं. So this is pre-synaptic neuron and the next one is post-synaptic neuron. And ये जो synapse है ये कौन सा synapse है? Chemical synapse या electrical synapse? क्या होगा ये? Chemical synapse. ये जो डॉट मैंने किया इसको आप साइटन और मैक्सिमम टू डेंड्रॉन्स में ही रखिएगा, नॉट इन द एक्सॉन. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? तो लोकेशन क्या है? ओनली इन द साइटन एंड द डेंड्रॉन, नॉट इन द एक्सॉन. बट there are fiber like structures present which is to be found everywhere throughout the cyton as well as axon, and these fiber like structures are called as what? Neurofibril. क्या है ये? तो न्यूरोफाइब्रिल आपको throughout the neurons मिलेगा, but nasal granules is to be restricted at the cyton and dendrons part only. स्थित बना देते हैं. तो ये इनर सिथ हो गया, माइलिन सिथ. Now it is the outer सिथ. आउटर सिथ का नाम मैंने क्या बोला था? न्यूरल लेमा. इनर सिथ. अब देखिए डायग्राम में एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि इनर सिथ जो माइलिन सिथ है वो डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है? Whereas माइलिन न्यूरल लेमा क्या है? So what is the point which is called as node of Ranvier here? The discontinuous point of myelin sheath is called as node of Ranvier.
This is actually axon hillock. So the point of transition between the cytosol and axon is called as axon hillock. And this is the axon. This is the dendron, and further branches of dendron is called as what? The dendrite. ये white color जो मैंने किया है, this is called as neurofibril. जो dotted मैंने किया है, these are actually nasal screening. And this is the nucleus. This is neurilemma. This is node of Ranvier. This is myelin sheath. This is the nucleus of Schwann cell. यहाँ पे खाली थोड़ा सा आइडिया हम दे देंगे. And this is actually the inner membrane of the axon is called as exolemma. And जो साइटोप्लाज्म की बात करें, तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है साइटोन में, that is called as what? क्या बोलते हैं उसको? न्यूरोप्लाज्म. एंड एक्सॉन में जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम क्या है? एक्सोप्लाज्म. Axon covered by the sheath called as exolemma. That is actually the not the sheath. Exolemma is the membrane. Plasma membrane of axon is called as exolemma. Cytoplasm is called as exoplasm. Cyton में जो cytoplasm है उसका नाम है neuroplasm. This is actually the chemical synapse. Here it is called as axon terminal or called as terminal arborization. Axon terminal is called as terminal arborization, जो कि branches हुआ है, and that is with the bulb-like structure, the knob-like structure called as synaptic node. Synaptic node में होता क्या है? Non-synaptic vesicle. And synaptic vesicle contains neurotransmitter. And most important neurotransmitter which is actually operated or present in your body is acetylcholine. समझ में आया? The gap between the two presynaptic and postsynaptic neuron is called as what? ये जो gap आपको दिख रहा है, ये gap का नाम क्या है? The synaptic cleft. Synaptic cleft क्या है? Fluid filled की air filled. And इस fluid का नाम क्या है? Neurotransmitter. So it is actually fluid filled space or gap. तो केमिकल साइनैप्स के ऊपर जो हो गया दैट इज प्री साइनेप्टिक. न्यूरॉन
एंड इसके नीचे जो हो गया पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ साइनैप्स आर देयर? ये तो मैंने केमिकल साइनस बताया. Why it is called as chemical sinus? Because of the presence of the chemical in between the two pre and post, and that chemical is called as what na? Neurotransmitter acetylcholine. Means chemical synapse में synaptic cleft present होगा कि absent होगा? Present होगा. अगर हम इलेक्ट्रिकल साइनैप्स की बात करें तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में क्या होगा ना? देयर इज नो गैप. वहां पे फिजिकली प्री एंड पोस्ट क्या है ना? कनेक्टेड. अगर कनेक्टेड है तो वहां पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होगा कि एब्सेंट होगा? प्रेजेंट. विच synapse contains gap junction between the pre and post? Electrical synapse. And which does not? ना chemical. तो chemical में gap junction नहीं है, इसीलिए तो chemical रिलीज हो रहा है. अगर गैप जंक्शन होता तो केमिकल रिलीज करने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहा है कि नहीं? केमिकल रिलीज होगा बाय द प्री और बाय द पोस्ट. प्री रिलीज करेगा, पोस्ट उसको रिसीव करेगा. तो रिसेप्टर फॉर द एसिटाइलकोलिन विल बी प्रेजेंट इन द प्री मेम्ब्रेन और पोस्ट मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है एंड प्री साइनेप्टिक वेसिकल में साइनेप्टिक वेसिकल होगा. साइनेप्टिक वेसिकल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट नहीं होता है. कहां पे होता है? प्री में. और उसको रिसेप्टर कहां पे होता है ना? पोस्ट. इसी वजह से जो कंडक्शन ऑफ इंपल्स है वो यूनिडायरेक्शनल है. कभी सोचे हो ये जो नॉर कंडक्शन है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? व्हाई नॉट इट इज बाई डायरेक्शनल? दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों. अगर दिमाग नहीं लगाओ तो कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा कि why the nerve conduction is always unidirectional? Why not it is bidirectional? क्योंकि साइनेप्टिक वेसिकल सिर्फ प्री में होता है एंड उसका रिसेप्टर कहां पे होता है? पोस्ट में. अब सोचिए साइनेप्टिक वेसिकल अगर प्री एंड पोस्ट दोनों में होता है एंड रिसेप्टर प्री एंड पोस्ट दोनों में होता तो बाइडायरेक्शनल होता है कि नहीं? अब हम दिमाग लगाएंगे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में अगर गैप जंक्शन है वो बाइडायरेक्शनल होगा कि नहीं? इसीलिए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कंडक्शन करता है बाइडायरेक्शनली, बट केमिकल साइनेप्स कंडक्शन करता है यूनिडायरेक्शन. ठंडा क्लियर है? थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि माइलिन सिथ इनर है कि आउटर है? डिसकंटिन्यूअस की कंटिन्यूअस? न्यूरिलेमा आउटर एंड कंटिन्यूअस. Node of Ranvier, that is the point of absence of what? Myelin cell. Point of absence of myelin cell is called as node of Ranvier. And Schwann cell क्या है? The Schwann cell is actually a connective tissue. हम लोग पढ़े कि कनेक्टिव टिश्यू का सिक्रेटरी प्रॉपर्टी है कि नहीं? Yes or no? Connective tissue का secretory property. So here the Schwann cell secreting what? Secrete both myelin sheath and न्यूरिलेमा. याद रखिएगा कि न्यूरिलेमा एंड माइलिन sheath is the product of which neuron और product of connective tissue. ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है. विच कनेक्टिव टिश्यू सेल? या स्वान सेल्स. तो स्वान सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे दिख रहा है. अगर स्वान सेल नहीं होगा तो माइलिन शीथ भी एब्सेंट होगा प्लस न्यूरिलेमा भी एब्सेंट होगा. लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल के एब्सेंस में माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है. हु डन दैट? हु प्रोड्यूस दैट? Oligodendrocyte. In absence of the Schwann cells in the central nervous system, who secreted the myelin sheath? Oligodendrocyte. ये सब conceptual चीज है. Complete है क्या?
कंप्लीट। 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। तो इसका लिख लीजिए, इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन लीजिए। टाइप ऑफ व्हाट? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो न्यूरोफाइब्रिल present in all part। इसका फंक्शन क्या है? द कंडक्शन ऑफ नॉन इम्पल्स। nasal granules it is present in cyton and dendrite। formed of mRNA, ribosome and RER। It is the site of protein synthesis। It is the site of protein synthesis। फंक्शन मैंने न्यूरोफाइब्रिल का मेंशन कर दिया, नेजल ग्रैन्यूल का मेंशन कर दिया। It is the site of protein synthesis where it is the neurofibril is the fiber which will conduct the impulse and which is the most sensitive part of the neuron। न्यूरॉन का सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन है? एक्सॉन हिलॉक। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट एक्सॉन हिलॉक। आगे चले, नेक्स्ट पेज में मूव करें, जल्दी करिए। फिनिश्ड। myelin से secreted or formed in PNS peripheral nervous system by Schwann cells। Schwann cells absent in CNS। इसीलिए देखो पीएनएस में स्वान सेल है तो वहां पे माइलिन से न्यूरिलेमा बोथ होगा, ठीक है। लेकिन सीएनएस में क्या है ना, स्वान सेल एब्सेंट है, तो न्यूरिलेमा एब्सेंट होगा कि प्रेजेंट होगा? एब्सेंट। तो न्यूरिलेमा एब्सेंट तो है लेकिन माइलिन से एब्सेंट होना चाहिए, बट ऑलिगोडेंड्रोसाइट स्पाइरल रैपिंग करके माइलिन से बनाता है। सो स्वान सेल एब्सेंट इन सीएनएस। सो इन सीएनएस न्यूरिलेमा एब्सेंट। In absence of Schwann cell, in CNS,
myelin sheath formed by processes of oligodendrocyte. And actually oligodendrocyte is a type of neuroglia. हम अभी सेकेंड न्यूरोग्लिया पढ़ेंगे कुछ ही देर में. तो न्यूरोग्लिया का बहुत सारे टाइप्स है. वन ऑफ द न्यूरोग्लिया इज कॉल्ड एज व्हाट ना oligodendrocyte. देखिए केमिकल साइनप्स दो टाइप है. नंबर वन इज exodendritic synapse. Second is exosomatic synapse. दोनों में डिफरेंस क्या है? Here it is the first one is in between what? Axon and between what? Axon and dendrite or dendron of the next neuron. Where the second is between what? Axon and between what? Axon and क्योंकि सोमा मैंने लिखा था अदर नेम ऑफ साइटोन. अगर एक्सॉन एंड साइटोन के बीच में डायरेक्टली होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसोमैटिक. अगर एक्सॉन एंड डेंड्रॉन के बीच में है तो एक्सोडेंड्रिटिक. तो मैक्सिमम क्या होता है ना एक्सोडेंड्रिटिक. नहीं प्रेजेंट होगा बिल्कुल प्रेजेंट. क्यों नहीं? तो फास्टर कंडक्शन के लिए क्या होता है? एक्सोसोमैटिक फास्टर कंडक्शन. सो वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखो बहुत सारा टाइप्स है. ये जो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? नंबर ऑफ नॉर्म प्रोसेसेस. मैंने आपको बताया कि नॉर्म प्रोसेस टू टाइप्स एक्सॉन एंड डेंड्राइट राइट. ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ नॉर्म प्रोसेस नंबर वन इज यूनिपोलर. सॉरी पहले लिखते एपोलर फिर आएंगे यूनिपोलर. सीरियली जाते. एपोलर मतलब क्या है? विदाउट एनी डेंड्रॉन सॉरी विदाउट एनी एक्सॉन एंड डेंड्राइट. नो डेंड्रॉन एंड नो एक्सॉन. ओनली साइटन इज देयर. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एपोलर. किसमें होगा? किसमें होगा? हाइड्रा. फर्स्ट फाइलम. The first phylum with neurons or nerve cell is Cnidaria. क्योंकि आप लोग पढ़े कि स्पॉन्जेसर पूरी फेरा में नो नर्व सेल. इसीलिए सेंसरी स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं किसमें? स्पॉन्जेस में. तो सेंसरी स्ट्रक्चर कहां से स्टार्ट हुआ? सेकंड फाइलम Cnidaria. एंड वो भी कौन सा सेल होता है ना? एपोलर टाइप ऑफ न्यूरॉन. नंबर टू यूनिपोलर. तो सिंगल नॉर्म प्रोसेस. एंड वो सिंगल नॉर्म प्रोसेस क्या है? ओनली एक्सॉन नो डेंड्रॉन. एग्जाम्पल क्या देंगे हम लोग? अर्ली एम्ब्रियो. अर्ली एम्ब्रियो के केसेस में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो यूनिपोलर होते हैं. नंबर थ्री बाइपोलर. बाइपोलर कहाँ पे होगा? रेटिना में होगा. सो वन एक्सॉन एंड वन डेंड्रॉन. एग्जाम्पल रेटिना ऑफ आई. और भी है आपका नेजल एपिथेलियम में होगा वो भी बाइपोलर न्यूरॉन है. और आपका ईयर में भी होता है वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व वो भी होता है. सो मैं खाली एनसीईआरटी बेस्ड आपको दे रहा हूँ. तो आप रेटिना ऑफ आई कर सकते हैं
एंड दूसरा कर सकते हैं नेजल एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी और नेजल एपिथेलियम कर सकते हैं। तो नेजल एपिथेलियम में बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व इन द ईयर आल्सो दैट कंटेंट, बट इट इज नॉट necessary to write there. Number 4, pseudo unipolar। pseudo मतलब क्या है? false। तो ये false unipolar है कि truly unipolar है? false, तो ये falsely unipolar है। मतलब true क्या है? truly bipolar। truly bipolar but looks like unipolar, that is why it is called as pseudo unipolar। मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम दे देता हूं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए। तो एपोलर like this, unipolar like this, with only one exon। बाइपोलर में क्या होगा ना, एक डेंड्रॉन होगा एंड एक एक्सॉन भी होगा। एंड स्यूडो यूनिपोलर में ये देखिए, ये साइटोन है एंड ये ब्रांच होके डेंड्राइट भी बना है, एक्सॉन भी बना है। तो क्या बोलेंगे इसको, ये बाइपोलर की यूनिपोलर? एक्चुअली बाइपोलर है, लेकिन कैसे दिख रहा है? यूनिपोलर की तरह। That is why it is called as truly bipolar, but looks like unipolar, so called as pseudo unipolar। And इसका लोकेशन क्या होगा? dorsal root ganglion of spinal nerve। And number 5, multiple। मल्टीपुलर में क्या होगा ना, मेनी डेंड्रॉन एंड वन एक्सॉन। This is most commonly to be found in the brain and spinal cord। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए up to the completion of the types of neuron। तो हम लोग जो डायग्राम किए थे वो किसका डायग्राम था? मल्टीपुलर का, मेनी डेंड्रॉन्स विथ वन एक्सॉन। तो नाउ वी कम टू, ये देखिए न्यूरॉन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे नर्व फाइबर। देन वी विल स्टार्ट द नर्व्स, अलग अलग चीजें। तो नर्व फाइबर का डेफिनेशन क्या होगा? एंसिस्ट और एंसिस्ट एक्सॉन। Encysted axon is called as nerve fiber and naked axon is called as what? Non-neuron। इसीलिए नर्व फाइबर दो टाइप है। On the basis of number of sheath, on the basis of number of sheath, nerve fiber दो टाइप, एक है myelinated otherwise called as what? The medullated nerve fiber। यहाँ पे कितना शीथ है? वन शीथ है कि टू शीथ है? मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ शीथ। फिर बताइए माइलिनेटेड और मेडुलेटेड नर्व फाइबर में कितना शीथ होगा? वन शीथ की टू शीथ?
2 होगा ना, अभी तो मैंने डायग्राम किया हुआ था, न्यूरिलेमा प्लस माइलिन शीथ बोथ, हाउ मेनी शीथ? 2 शीथ। बाकी स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन किया है कि इट इज विथ नोड ऑफ रैनवियर की विदाउट नोड ऑफ रैनवियर, विथ नोड ऑफ रैनवियर। फास्टर कंडक्शन की स्लो कंडक्शन, and that faster conduction of impulses is called as saltatory conduction. पढ़े हो कि नहीं saltatory conduction? Saltatory conduction is applicable to the myelinated nerve fiber or medullated nerve fiber. And myelin sheath का color क्या है? What is the color of the myelin sheath? ना white color. That is why the white matter is made up of myelinated ki unmyelinated, and gray matter is made up of, तो किसका कलर व्हाइट है ना, माइलिन शीथ का कलर ही होता है व्हाइट, इसी वजह से व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड होता है। It is present in the white matter of CNS. बाकी रहा नंबर 2, unmyelinated और non-medulated nerve fiber। यहाँ पे one sheath होगा, and that sheath is called as what? अगर शीथ नहीं होगा तो नर्व फाइबर कैसे बोलेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? शीथ तो कंपल्सरी होगा ना, फॉर टू क्वालिफाई फॉर द नर्व फाइबर इट मस्ट कंटेन्स एटलीस्ट वन शीथ, and that is why it is called as nerve fiber, because one sheath neurolemma is present but myelin sheath is absent, so called as unmyelinated or non-medulated nerve fiber। तो यहाँ पे क्या होगा? with की without node of Ranvier, without node of Ranvier। faster conduction की slow conduction, slow conduction होगा of impulse, and this is actually forms the gray matter of central nervous system। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आधे घंटे लगेगा कंप्लीट करने में, उसको कंप्लीट करके तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? बायोमोलेक्यूल, राइट।